हेलो। हाँ, वो चेक कर रहे हैं क्यों क्या हो रहा है, वो स्टूडियो पर्सन के साथ बात किया, वो चेक कर रहे हैं। क्या क्या? नहीं नहीं, हो गया, बट हो गया। Very good afternoon to all of you. Am I audible, visible? Am I audible, visible? Very good afternoon, Sunita, Lipsa. Am I audible to all of you? Yes, now I can see your comments. Maybe there are certain technical problem for which I'm not able to see what was happening. Now everything clear? Audio, video सब clear अच्छी? समस्तंगु? समस्तंगु clear? ठीक है, all right. So let's start today's topic of discussion. Ajira topic of discussion achi. This is an orientation session to OPSC civil service examination. जो माने exactly OCS परीक्षा ପାଇଁ prepare होचंती एवं economics जो माने को difficult लागुची सेमान को ପାଇଁ आजरा session. So आज हमें previous year question ऊपर discuss करिवा, trend ऊपर discuss करिवा कि what is the right approach to economics को way रे पढ़िवा दरकार, theory पढ़िबे, practice पढ़िबे, current affair केमती पढ़िबे, बा हिंदू एडिटोरियल को केमती एनालिसिस करबा दरकार, फ्रंटलाइन योजना कुरुक्षेत्र ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली को केमती एनालिसिस करबा दरकार, मेंस पई केमती नोट्स तैयारी करिवे, प्रीलिम्स पई केमती नोट्स तैयारी करिवे, एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. ये सेशन ने आमे ये सब पॉइंट ऊपर आदि डिस्कशन करबा. यदि कहार किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि, यदि कहार किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि ताले डेफिनेटली आपण कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे एंड आई विल गेट बैक टू यू. सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? समस्ते एथर को ओपीएससी परीक्षा ପାଇଁ प्रिपेयर होतंती जो माने प्रेजेंट अछंती. All of you are preparing for OPSC examination? All of you are preparing for OPSC examination? Yes or no? Yes or no? समस्ते प्रिपेयर होतंती, बहुत बढ़िया. ठीक अछि. So economics as a subject, how do you find economics as a subject? Difficult, moderate, easy? केमती लागुची economics? How do you find this particular subject? Very good afternoon, Riti, Padma, Shanti. Good afternoon to all of you, those who are present. सो केतरा बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करिया पूर्वरु मते कोन इकोनॉमिक्स केमती लागुची, डिफिकल्ट लागुची ना इजी लागुची ना सब हे जाउची क्वेश्चन आंसर ना किछि प्रॉब्लम होउची? एक्जेक्टली जे जहा फेस करछन सेम जिंस कोन.
तो आज टॉपिक स्टार्ट करने पूर्वर हमें देखा कि इकोनॉमिक्स को केमती हमें डील करवा दरकार व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट और सिलेबस एनालिसिस along with previous year question trend ये आम बहुत इंपोर्टेंट ये आम कहीं इंपोर्टेंट जदि आम न जानी परिबा कि व्हाट इज द सोर्स ताहले हमें प्रॉपर्ली पढ़ी परिबानी until and unless you are aware about the source what to study what not to study what are the sources or resources books magazine list newspaper जहाँ को फॉलो करवा दरकार जदि न जानी परिबा ताहले हमें पढ़ी परिबानी रीति पद्मा कहते कि टिके हार्ड लगुच नो प्रॉब्लम क्लास कला परे हमें देखिबा कि ये सब्जेक्ट आम पई डिफिकल्ट लगुच ना इजी लगुच जो माने रिगरसली क्लास करूछंती जुडिशियसली जो माने पढ़िबे नोट्स प्रिपेयर करिवे क्लास अटेंड करिवे आई एश्योर सेमाननकु इकोनॉमिक्स केबे भी डिफिकल्ट लागिबा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जदि हम क्वेश्चन आंसर कथा डिस्कशन करिबा ये प्रीलिम्स हो बा मेंस हो नो डाउट जो जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करूचे रिवॉल्विंग अराउंड द सेम कांसेप्ट क्वेश्चन ओपीएससी ओसीएस परीक्षा रे पतरा जिवो खाली प्रीलिम्स रे इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सब्जेक्ट नुहे बा मेंस रे इकोनॉमिक सोशल इश्यू सब्जेक्ट नुहे रादर इकोनॉमिक्स रे पढ़िथिबा पाठ हमको मल्टीपल डायमेंशन ने हेल्प करिवो इकोनॉमिक्स रे पढ़िथिबा पाठ हमको मल्टीपल डायमेंशन ने यूज करिवा जहा को हम जीएस 1 2 3 4 प्रत्येक पेपर रे इकोनॉमिक्स रे पढ़िथिबा सब्जेक्ट रो यूज करा जिवो माने कर किछि एग्जांपल दोउची लेट्स से कैपिटलिज्म रे हमें जहा पढुचे सेम थिंग हमें एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड रे मध्ये पढिना पेपर 4 रे बा सोशलिज्म रो कांसेप्ट एठी जहा यूज होउची पीपीपी मॉडल रो कांसेप्ट जहा यूज होउची ताको मध्ये हमें जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी रे पढिना ता बाद जदि हमें देखिबा एठी सोशल इश्यूज इकोनॉमिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ how distribution of the resource of the country it leads to economic inequality जेमति कि मुको लैंड रिफॉर्म इंडिया रे प्रॉपर्ली मैनेज हे पल्लानी बा प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हे पल्ला नै जहा द्वारा एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बा नक्सल जोटा 1967 रे नक्सलिज्म जहा कहउचे बा माओवादी बोली जहा कहउचे एटा कोडी केबे सृष्टि हेतला 1967 में आई होप समस्त जानिथिबे एटा काहे की क्रिएट हला आर बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला बा बेसिक कॉज कोन थिला ना इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बा इकोनॉमिक जस्टिस समस्त को मिल पारला नहीं सो लैक ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस लेड टू अ बिग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन 1967 नक्सलिज्म वाज अ थ्रेट टू अ सिंगल विलेज दैट इज नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल बट इन 2024 this is the biggest security threat in India this is one of the biggest security threat in India जहाँ पे every year there is a lot of emotional and economic loss in terms of death इमोशनल इकोनॉमिक लॉस इन टर्म्स ऑफ रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब को नष्ट कर दिया जाउची एवं इमोशनल लॉस इन टर्म्स ऑफ डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डेथ ऑफ ट्राइबल यूथ जो मान को पुलिस इन्फॉर्मर भाबी कि माओवादी माने हत्या कर दउचंती सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी सो इकोनॉमिक्स रे जदि हम देखिबा दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन न होबा कारणरू बा जदि हम कहबी इकोनॉमिक जस्टिस न मिलवा कारणरू it created different type of disturbance in the society वर्तमान समस्त देखते बांग्लादेशी माइग्रेंट दे आर कमिंग टू इंडिया now problem कौन what is the exact problem with Bangladeshi migrant whether the citizen of Bangladesh those who are coming to India as a forced refugee whether they are enemy to India by Indian citizen को पूरा समान शत्रु की बा हमें तांको प्रति कोनसी प्रकार असदाचरण हो बा हमें समान प्रति कोनसी प्रकार हार्श स्टेप हो which may create communal violence बा bloodshed जे क्रिएट करियो ए टाइप रो इश्यू हमें क्रिएट करिबाटा उचित कि अनुचित ना जदी ए बळा डिस्टर्बेंस हमको वर्तमान देखिया पई मिलुची बिटवीन बांग्लादेशी सिटीजन एंड इंडियन सिटीजन व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस या पछरे कारण कोन ना पछरे मुख्य कारण जदी सब पॉइंट जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन कली देखिबे दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस और दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स किए केते रिसोर्स को यूटिलाइज करि करछ कहा पाखरे केते अधिक रिसोर्स अछि समस्ते पढितबे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन ने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ऊपर समस्ते पढितबे मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस इंडियन ओशियन नाउ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म भीतर केमते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होची हाउ द बिग कंट्रीज और द सुपर पावर्स लाइक यूएसए यूके फ्रांस चाइना से माने केमती कंट्रोल करिया पई चाहुथन पूर्वरु कोन थिला पूर्वरु जो कंट्री पाखरे मिलिटरी स्ट्रेंथ बा डिफेंस स्ट्रेंथ जते अधिक थिला से कंट्री को हमें सेते डेवलप्ड कंट्री बोली मानथि जो कंट्री पाखरे डेवलपमेंट को हमें बा सबुतु सुपर पावर कहा को कहउथि जहा पाखरे
डिफेन्स पावर अधिक थिला बट नाउ द सिचुएशन हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड एबे सब चेंज हो जाइछ वर्तमान कहा को मानुछ सुपर पावर बोली जी जहाँ पाखरे इकोनॉमिक पावर अधिक अछि जहाँ पाखरे इकोनॉमिक पावर अधिक अछि पॉलिटिकली सी पावरफुल जी इकोनॉमिकली पावरफुल इन द सेम वे डिफेन्स सेक्टर जदि हम देखिबा डिफेन्स वाइज मध्ये से कंट्री पावरफुल जी इकोनॉमिकली पावरफुल नाउ इकोनॉमी or the status of the health of the economy of a nation that becomes the standard of measure to find out which country is a superpower. Who country superpower में केमती जानिबा ना depending on the economic status of the country. से country रो currency रो value केते से country foreign direct investment को rate रहउची से country liberalization globalization privatization केते दूर acceptable से country रो net factor income from abroad केते से कंट्री बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट केते से कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड केते से कंट्री ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रे प्राइमरी सेक्टर परसेंटेज केते सेकेंडरी केते टर्शियरी केते क्वाटरनरी केते केते परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दे आर इन प्राइमरी दे आर इन सेकेंडरी एंड दे आर इन टर्शियरी सेक्टर ये सब फैक्टर इंक्लूडिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्लूडिंग योर हेल्थ केयर फैसिलिटी including educational facility rate of skill development rate of employment or rate of unemployment or depending on the how much of money is available in the market depending on the banking health of the country depending on the capital and money market health of the country ये सब फैक्टर को लेके हमें गोटे कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करूछे बा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमें डिटरमाइन करूछे व्हिच गिव्स अ फाइनल रिजल्ट दैट को कंट्री सुपर पावर सो ताले वर्तमान समय जदि हमें देखिबा 2024 मसिया रे को कंट्री को हमें सुपर पावर कहबा बा को कंट्री कहबा इन द सेंस मु जानिया पई चाहूची कि को कंट्री बा को क्राइटेरिया थिले गोटे कंट्री को हमें सुपर पावर बोली कहबा वेदर इट इज द मिलिटरी क्राइटेरिया बा डिफेंस क्राइटेरिया और दिस इज द इकोनॉमिक क्राइटेरिया एतिक जेतिक डिस्कशन कले मते तारि भितरे कोंतु गोटे कंट्री को सुपर पावर बोली हमें केतेबेले कहबा जदि ता पाखरे डिफेंस फोर्स अधिक अछि ना जदि ता पाखरे इकोनॉमिक फोर्स अधिक अछि बा इकोनॉमिकली द कंट्री इज मोर एम्पावर्ड इकोनॉमिकली जदि हम देखिबा द कंट्री इकोनॉमी इज वास्ट इट कंट्रोल्स इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज लेट्स से इट एक्सपोर्ट्स मनकर गोटे कंट्री माने जे एक्सपोर्ट करछि कोडी ना फॉरेन कंट्री मानको एक्सपोर्ट करछि एंड इट कंप्लीटली डोमिनेट्स द मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज मार्केट डोमिनेशन अधिक अछि मार्केट डोमिनेशन मनकर लेट्स टॉक अबाउट आईटी एंड आईटीएस सर्विस लेट्स से सॉफ्टवेयर रे जदि इंडिया गोटे लीडिंग एक्सपोर्टर हुए ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइक बीपीओ केपीओ एलपीओ ये सब हुए एवं इंडिया जदि मार्केट को प्रत्येक कंट्री मार्केट को कैप्चर कर दिए इंडिया जदि प्रत्येक कंट्री मार्केट को कैप्चर कर दिए इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मार्केट को ताहले कोन इंडिया रो वैल्यू बढ़िला कि नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो दिन इंडिया बा इंडिया रे इन्वेस्टर माने सॉफ्टवेयर बा आईटी एवं आईटीईएस फील्ड रे इतबा इन्वेस्टमेंट रो ओहरी आसीबे फॉरेन कंट्री ऑटोमेटिकली से फॉरेन कंट्री इकोनॉमी क्रैश कर जिवो कि नहीं से कंट्री इकोनॉमी क्रैश कर जिवो कि नहीं बुझी परछन मु कोन कहया पई चाहूची और एनी डाउट पॉइंट बुझी परछन एठी ओ पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करिया पई चाहूची सो एटा त हमें वर्ल्ड ऑर्डर रे देखुचे माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज how much economy or economics as a discipline as a subject matter is relevant for you how it is relevant for you am pai eta kemti relevant mu tari upar he discussion kuru so I will draw your attention to two aspects the first one is the global order or I will be talking about the world economy and what should be the health condition of an economy to be a superpower to declare a country as a superpower and second I will be talking about the most grassroots level thing that is the rate of employment facility being generated at the village level or what is the rate of rural development or what is the rate of employment facilities available what is the rural gdp what is the contribution of rural women or what is the labor force participation rate in case of male and female in case of rural and urban area what is the total production in rural area or what is the backbone of rural economy या ऊपर को मध्यम आसी so दीटा aspect ऊपर I am trying to draw your attention गोटे कहली वर्ल्ड इकोनॉमी आ गोटे कहली रूरल इकोनॉमी बा रीजनल बा रूरल इकोनॉमी ऊपर मु फोकस करछि ए दीटा जाका एस्पेक्ट हम पई इंपोर्टेंट नाउ थिंक वर्तमान भाबंतु कि इकोनॉमिक्स एज एन एकेडमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर हम पई केते रिलेवेंट या हम पई केते रिलेवेंट वर्तमान कोन बुझिउ कि नै बुझिउ ए पर्यंत समस्त बुझिले जहा कहली सो standard of economy or health of economy of a country that decides the supremacy of a country supremacy of that particular country जहाँ पाखरे डिफेंस पावर अधिक अच्छी आमे ताको गोटे पावरफुल कंट्री बोली कहबानी रादर जहाँ पाखरे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अधिक अच्छी इकोनॉमी जहाँ स्ट्रांग जेते अधिक स्ट्रांग जहाँ स्ट्रेंथ जेते अधिक जो कंट्री ताको हमें मोस्ट पावरफुल कंट्री बोली कहबा सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज इंपोर्टेंट फॉर अस वर्तमान में आसीबा
कि व्हाई इट इज देयर इन योर सिलेबस हम सिलेबस रे ये काहे अछि जदि हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर होछे ताले हम सिलेबस रे रहिबार कारण कोन व्हाई इकोनॉमिक्स कि कोई परिवानी आंसर या पर मु बारंबार डिस्कस करे तो क्लास या सेम पॉइंट ऊपर बा सेम टॉपिक ऊपर हमर आलोचना हुई गोटे पॉइंट मु कहे कि पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट पुलिस स्टेट रे फंक्शन कोन ना पुलिस स्टेट रो फंक्शन होची एटी स्टेट कहले हम कोन बुझे ना स्टेट कहले हम बुझे गवर्नमेंट एटी गवर्नमेंट कोन करूची ना हियर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन गवर्नमेंट कोन करूची ना हियर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन गवर्नमेंट हमको एटी प्रोटेक्शन दूची हैला এবং ওয়েলফেয়ার স্টেট রে কোন होची ना गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची कोन कहली गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूची हैला येला डिफरेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे जगह रे करूची पुलिस स्टेट गोटे जगह रे ताले मते कोंतु समस्ते प्रथमे हमको कोन दरकार व्हिच टाइप ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड पुलिस स्टेट दरकार ना मते कोंतु प्रथमे पुलिस स्टेट दरकार ना प्रथमे हमको वेलफेयर स्टेट दरकार समस्त आंसर दियंतु नमिता शांति रीति पद्मा लिप्सा सुनीता सौदामिनी समस्त कहतु प्रथम हमको कौ टाइप ऑफ स्टेट दरकार वेदर दिस इज द पुलिस स्टेट और दिस इज द वेलफेयर स्टेट कौन दरकार नो डाउट हमको पुलिस स्टेट दरकार प्रथम प्रोटेक्शन मिले ही तापर हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा भाबिबा प्रथम हमको प्रोटेक्शन दरकार तापर हमको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट र आवश्यकता अछि बट दिस इज इंपोर्टेंट खाली प्रोटेक्शन हेले कोन हो जदि हम पाखरे हेल्थ केयर नाही एजुकेशन नाही जीडीपी ग्रो होनी प्रोडक्शन होनी एम्प्लॉयमेंट नाही पॉवर्टी हंगर malnutrition अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जदि अधिक रहउती देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन सो प्रोटेक्शन खाली शत्रु मानक ठू आवश्यकता पड़ी नथाय प्रोटेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम पॉवर्टी फ्रॉम malnutrition फ्रॉम हंगर फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट हैला ये सब मध्ये हमको प्रोटेक्शन दबार आवश्यकता अछि नाउ हु टेक्स केयर ऑफ दिस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के प्रोटेक्ट करियो हमको ना स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करियो नाउ इट इज responsibility of the state to provide protection to us first point and it is responsibility of the state to provide to do socio-economic welfare or socio-economic development for us. So ये कारण मानक पाई हमको इकोनॉमिक्स रा आवश्यकता अछि. So इकोनॉमिक्स रे हमें कोन पढिबा बेसिकली हम कोउतर हेल्प करिवो राइट इन्फॉर्म्स डिसीजन ऑफ कंपनी एंड गवर्नमेंट ये कंपनी एवं गवर्नमेंट रा डिसीजन जणे इट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग डे टू डे लाइफ रे ये प्रत्येक दिन को हमर इन्फ्लुएंस करूछ डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करूछ केमती ना वर्तमान बजेट आसिला हमें डिस्कशन करूछ रेट केते इन्फ्लेशन केते हिच हमें देखते इंटरेस्ट रेट केते हला रेपो केते हला रिवर्स रेपो केते हला एसएलआर सीआरआर की केते चेंज हला आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रे कोन चेंजेस करे ता ऊपर डिस्कशन करूछ हमें डिस्कशन करूछ टैक्स स्लैब रे का को बेनिफिट हला का को लॉस हला हमें देखते वर्तमान बजेट आसिला गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स को कमै देबे एवं जीडीपी रो इन्वेस्टमेंट को हेल्थ रे जीडीपी रो इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन रे जीडीपी रो इन्वेस्टमेंट को फॉर सोशली डेवलपमेंट जो स्कीम गुडा कथा है लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ए टाइप ऑफ स्कीम ऊपर लास्ट बजेट को जदि आपण एनालिसिस करिवे देखिबे कि सेतरे गवर्नमेंट रो इन्वेस्टमेंट कमी जाय छै एवं साइमल्टेनियसली कॉर्पोरेट टैक्स जदि हम देखिया कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया छै तन कॉर्पोरेट कंपनी बेनिफिट पाइबे जो माने साधारण लोक समान ऊपर यार नेगेटिव इंपैक्ट पड़े नाउ व्हाट अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट now what about inclusive development now what about social development or development of social sector like healthcare facility and educational facility how can we formulate more human resource if investment in the socially activated fields are very low जदि हेल्थ रे जदि एजुकेशन रे स्किल डेवलपमेंट रे फूड सिक्योरिटी मिशन रे मनरेगा रे इन्वेस्टमेंट कमी जाए ताले हम ह्यूमन रिसोर्स केमते डेवलप करि परिबा रूरल इकोनॉमी को केमते डेवलप करि परिबा बा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को केमते रिड्यूस करि परिबा नेचुरल रिसोर्स को केमते हम यूटिलाइज करि परिबा now it puts a question mark so when we talk about economy we always talk about how it hampers or how it affects our day to day basis re ya our life पर केमते impact पहुंच so as a broad subject economics provides answer to a range of health social political issues that impact households and wider community so ये सब community ऊपर economics रा impact कना करते so in generally यदि हम देखिबा there are certain socio economic issues and सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन कहली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज गोटेला सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आ गोटेला पॉलिटिको इकोनॉमिक इश्यूज यदि यार सोर्स कहबे ना सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कोठी अधिक पढ़ी परिबे एवं पॉलिटिको इकोनॉमिक इश्यूज गुडा को कोठी अधिक पढ़ी परिबे कोठी कहि परिबे मते के व्हाट इज द सोर्स
कोई परियो मते व्हाट इज द सोर्स कोडिया को पढुचे को मैगजीन अधिक अधिक पढुचे की कोई परिवे सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज एटा को हमें पढ़ी परिबा ईपीडब्ल्यू रु कोडी कहले ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एटा गोटे वीकली मैगजीन दिस इज द वीकली मैगजीन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज गुडा कोड पढ़ी परियो व्हाट इज द बेटर सोर्स इज फ्रंटलाइन एटा फोर्टनाइटली आसे 15 दिन रे थरे फोर्टनाइटली 15 दिन रे थरे एवं द हिंदू एडिटोरियल इज द बेस्ट वन टू गो फॉर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज to go for socio-economic issues, inclusive development, sustainable development, development for vulnerable section, marginalized section, ये सब पढ़िया पाई हम पाई सबुठु बेस्ट सोर्स होची द हिंदू एडिटोरियल सेकंड बेस्ट इंपोर्टेंट सोर्स इज द फ्रंटलाइन होची गोटे फोर्टनाइटली मैगजीन 15 दिन रे थरे आसे पॉलिटिकल इकोनॉमी इश्यूज को पढ़िया पाई हम पाई बेस्ट सोर्स होची इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीक नाउ ये तीनटा पॉइंट को मैं कंबाइन करिया पाई चाहूची कि इकोनॉमी रो इंपैक्ट सोसाइटी ऊपर मध्य पड़े साइमल्टेनियसली इकोनॉमी रो इंपैक्ट पॉलिटी ऊपर बा पॉलिटिक्स ऊपर मध्य पड़िଥାଏ सो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी दे आर वेरी मच कनेक्टेड कोन कहली पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये तीनटा जाका सब्जेक्ट बहुत इजीली कनेक्टेड काहे कि ना इकोनॉमिक इश्यूज लीड्स टू सोशल डेवलपमेंट और सोशल अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी डेवलप हेले सोसाइटी डेवलप होबो बा सोसाइटी अंडर डेवलप होबो इकोनॉमी रे ग्रोथ रेट अधिक सोसाइटी ऊपर इंपैक्ट पड़े ग्रोथ रेट कम सोसाइटी ऊपर इंपैक्ट पड़े टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट अफ्रीका or let's talk about the 𝐒𝐵𝐾 region in Odisha. 𝐒𝐵𝐾, this is the most infamous region in the world. This is infamous for hunger, infamous for illiteracy, infamous for poverty, malnutrition. ये सब पाई infamous region होची के ना 𝐒𝐵𝐾 region ओडिसा थ्रू आउट द वर्ल्ड मु केवल ओडिसा रे कथा बा इंडिया रे कथा कहू सेमति सब साहारान अफ्रीका region जदि हम देखिबा थ्रू आउट द ग्लोब दिस इज वेरी मच अंडर डेवलप्ड region ये मध्ये अंडर डेवलप्ड sustainable development nahi agricultural facility nahi rate of poverty incidence of poverty is maximum rate of unemployment is high inflation rate is high production is low so overally जदि हम देखिबा ए रीजन इकोनॉमिक स्टेटस ता लो एंड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सोशल स्टेटस ऑफ द कंट्री व्हिच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सोशल स्टेटस ऑफ द कंट्री एला प्रथम कथा कोन कहली ना इकोनॉमिक स्टेटस बा इकोनॉमिक हेल्थ जदि नेगेटिव हुए ताल ऑटोमेटिकली आर इंपैक्ट कहां पर पड़िबो ना सोसाइटी ऊपर पड़िबो सो सोशल हेल्थ विल बी रिड्यूस्ड लो सोशल हेल्थ आसे इन द सेम वे इकोनॉमी टा को कंट्रोल किए करूची जो पॉलिसी आसुची हम देखु जे को टाइप रो पॉलिसी आसे दी प्रकार रो पॉलिसी परियो को टाइप रो पॉलिसी गोटे हला हमर फिस्कल पॉलिसी गोटे हला फिस्कल पॉलिसी आ गोटे हला मॉनेटरी पॉलिसी आ गोटे हला मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का इंडिया रे कोड जेटा बजट देखुचे फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई है ये जो पॉलिसी देखुचे ये पॉलिसी ता की इट इज मोस्टली डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री सो पॉलिटिकल लीडरशिप दिस इज हाउ दे मैनेजेस द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द कंट्री ट्रेड केते हबोनी एक्सपोर्ट केते हबो इंपोर्ट केते हबो इलेक्शन पूर्वरु एक्सपोर्ट हबो ना नहीं लाइक पोटैटो ओनियन टमाटो ये प्रोडक्ट गुडा कर हाई एक्सपोर्ट हुए इंटरनेशनल मार्केट रे इंडियन पोटैटो टमाटो ह्यूज डिमांड बट जस्ट बिफोर इलेक्शन द गवर्नमेंट पुट certain restriction on export of these essential items because it will lead to increase in price यदि बाहर कंट्री को अधिक पळाए ऑटोमेटिकली इंडिया रे प्राइस बढ़ी जिवो सो लोक कहबे इन्फ्लेशन हे गला सरकार कोन करूची ना सरकार प्राइस चेक करी परनी तो सरकार को वोट देबे एही कारण पई कोन हुए ना एक्सपोर्ट ऊपर रेस्ट्रिक्शन लागि जाय बिफोर इलेक्शन ना सो दिस इज हाउ देखो बुझो चेष्टा करू दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू इकोनॉमी तले में तीनटा जिंस हम एटी देखिले बेसिकली इकोनॉमी रो इंपैक्ट साइमल्टेनियसली कहां ऊपर पडुची ना इंपैक्ट पडुची ऑन द पॉलिटी एज वेल एज ऑन द सोसाइटी बा हम कहबी पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमी ऊपर जहां इंपैक्ट पडुची सेटा को सोशल स्ट्रैटा रे बा सोसाइटी रे सेटा रिफ्लेक्टेड होची को कंट्री केते डेवलप करिवो हेल्थ केयर फैसिलिटी केते रहिवो कोडी हेल्थ केयर फैसिलिटी कोन से ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करूची ना नहीं ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिसाइडेड हियर इज दिस क्लियर एटा समस्त बुझी पाले सोसाइटी इकोनॉमी और पॉलिटी हाउ दे आर इंटरलिंक्ड हाउ दे आर कनेक्टेड ना का डाउट अछि जदि डाउट अछि कोन तापर हम नेक्स्ट पॉइंट को जिबा कि एटू व्हाट शुड बी द सोर्स को सोर्स हमें पढिबा दरकार बुक लिस्ट कोन होवा दरकार ना प्रथमे हम कहबी एनसीईआरटी 9 ରୁ 12 पढिया पई नीति आयोग रिपोर्ट पढ़िया पई रमेश सिंह वन ऑफ द बेस्ट बुक द हिंदू एडिटोरियल बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सब पढ़िया
ना रमेश सिंह बही गोटे मेरिट अच्छे डिमेरिट अच्छे यार मेरिट हूँ ये बही सब किसी अच्छे आ ये बही डिमेरिट हूँ कि ये बही सब किसी अच्छे मेरिट आउ डिमेरिट ये बही समान ये बहुत भास्ट बही बहुत देचे जोटा रिलेवेंट भी देची जोटा इरिलेवेंट भी देची now the point is to discriminate between the relevant portion and the irrelevant portion ये दिटा को डिस्क्रिमिनेट करिवार आवश्यकता रही काकू ना रिलेवेंट और इरिलेवेंट पोर्शन एवं लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज क्वाइट टफ लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज क्वाइट टफ याकू हमें यूटिलाइज बा यूज करि परिबानी ताको बुझिया पई हेले टिके पढिया पडियो मन दे सो जो माने क्लास करूछंती कंटीन्यूअस क्लास करूछंती सेमान को मु रेकमेंड करिवे कि क्लास नोट्स करिया पई क्लास रे जो नोट्स करूछंती जोड़ा बर्तमान हमर बैच आक्रोश बैच रे जाम पढेली बा सक्षम बैच रे जाम पढेली तो क्लास नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट ता बाहर ता बाद आउ कुछ पढिबार आवश्यकता नाही हैला नमस्कार मानस थिंक यू जॉइन लेट बुझेला सो क्लास नोट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास नोट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास नोट को पढंतु ठीक भाबरे हे जो ता बाद आउ कुछ पढिबार आवश्यकता नाही ओनली करंट अफेयर पढिबे ओनली करंट अफेयर पढिबे दैट टू करंट अफेयर रा एडिटोरियल एनालिसिस प्रत्येक संडे 11टा बेले प्रत्येक संडे 11टा बेले अपलोड होची को माने करिसंती करंट अफेयर रो एडिटोरियल एनालिसिस क्लास को माने करिसंती एडिटोरियल एनालिसिस क्लास प्रत्येक संडे 11टा बेले अपलोड होची करंट अफेयर बा एडिटोरियल एनालिसिस मेंस पर्सपेक्टिव विथ नोट्स समस्त नोट्स करि परिबे केति की पोर्शन पढिबे एवं सेटा को जीएस पेपर को आसीची को जीएस पेपर को आसीची सेटा को साउंड साउंड तो ठीक अछि वर्किंग फाइन फ्रॉम माय साइड को टॉपिक रो आसीची को सब टॉपिक रो आसीची ये सब पॉइंट से डिस्कशन नैची तो ताको समस्त से नोट्स पढि परिबे बुझेला नाउ कम टू ये ना बुक लिस्ट ये पॉइंट ऊपर पढिबे नाउ वर्तमान में देखिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एवरेज कहि दोची इकोनॉमिक्स रु 12 टा रु 15 टा क्वेश्चन पढिबे इकोनॉमिक्स रे 12 रु 15 टा बाम पाकर 7 टा सब्जेक्ट अछि से अनुसार डिवाइड कर इक्वली पाका पाके सब को आसे तो 14 15 टा क्वेश्चन हमें माने के चलिया कोटो केते क्वेश्चन आसला मते लिखिछु नो इंपोर्टेंट होची हम पई इकोनॉमिक्स रो सिलेबस जानिबा एवं इकोनॉमिक्स रो सिलेबस जानिबा एवं माइक्रो सिलेबस जानिबा होची हम पई बहुत इंपोर्टेंट मानस कहउछ कि सब नोट्स बनै के रखिछि आपन को क्लास रो बहुत हेल्पफुल हबो जेतले प्रीलिम्स परीक्षा देबे मेंस परीक्षा देबे आफ्टर दैट जस्ट कम बैक टू मी एंड लेट मी नो हाउ मच और हाउ टू व्हाट एक्सटेंट these notes were accessible or to what extent these notes were helpful in your examination केते दूर ये नोट्स हमको हेल्प करथिला परीक्षा प्रीलिम्स टाइम मेंस टाइम हम परीक्षा पर डिस्कशन करिया सो एटी माइक्रो सिलेबस देखंतु ये कहउची कोन कोन अछि हम पाखर ना बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब टॉपिक ये टॉपिक रे हमें कोन पढिया दरकार कोन न पढिया दरकार आगु को देखिबा को पॉइंट पढिबा को पॉइंट पढिबा इट दिस द एंटायर माइक्रो सिलेबस आपको समस्त डाउनलोड कर देबे आज एको मु डिस्कशन करूनी को टॉपिक अंडर रे कोन अछि मन कर बैंकिंग रे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक बैड लोन्स बैड बैंक बेसल नॉर्म्स ये सब इंपोर्टेंट पार्ट हैला सेमती प्रत्येक टॉपिक रे को सब टॉपिक पढिया दरकार एठी मु कहि छी ना वर्तमान में क्वेश्चन को आसीबा ट्रेंड एनालिसिस को आसीबा हमें वंस ट्रेंड एनालिसिस देखिले हम जानि परिबा कि को पॉइंट को केमती पढिबा बा व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स फॉर ओसीएस एग्जाम देखंतु एठी 2011 15 16 11 पर तो डायरेक्ट एग्जाम 15 रहितला मु ए पर्यंत जाउनी डिस्कशन 15 16 17 पर्यंत छाडी होची एटी बेसिकली जहा थिला क्वेश्चन एगोडा का स्टैटिक नेचर रो क्वेश्चन थिला स्टैटिक फॉर्म क्वेश्चन थिला बा जदि हम देखिबा इजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ थिला इजी टू मॉडरेट बेसी डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ स्पेसिफिकली 2021 से 22 रो क्वेश्चन को मु फोकस करिया पई चाहूची 2021 एवं 22 रो क्वेश्चन को फोकस करिया पई चाहूची कि यार रिलेवेंस कोन थिला एटी इंपोर्टेंस कोन थिला ई क्वेश्चन एटी देखो 2022 रो क्वेश्चन ना डायनामिक क्वेश्चन थिला करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थिला किछि टाइप रे स्टेटमेंट आसला कांसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट एवं फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट बा स्टैटिक स्टेटमेंट दीटा टाइप रो स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन पचारथला हमें 2022 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखंतु 2022 रो क्वेश्चन हमें देखिबा कि ये को टाइप रो क्वेश्चन पचारिया को चाहू सेही अनुसार हमें प्रिपरेशन करिया सेही अनुसार हम पढिया ये गोटे क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विड्रॉल ऑफ 2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन 2000 टंकिया करेंसी नोट को विड्रॉ करिया पछरे कारण कोन या पछरे बेसिक रीजन कोन था देखो एटा कोड आसीतिला ना एटी गोटे एडिटोरियल मु देछि मे 19 मे 2023 रे द हिंदू रो गोटे एडिटोरियल आसी
द हिंदू एडिटोरियल आसला एटी को लिंक मध्य दे दिस इज द लिंक ए लिंक को क्लिक कला पर देखिए कि हिंदू रे यार ऊपर एई पॉइंट ऊपर एडिटोरियल आसी एई पॉइंट ऊपर डिस्कशन है हैला रिलेटेड टू विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीस करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन कोड देख पारे कहले एटा को देखिबे द हिंदू मे 19 मे रे यहाँ पर डिस्कशन है बुझी पाले हेलो पिज्जा वेरी गुड आफ्टरनून आमे यहाँ पर डिस्कशन करूचे आज इकोनॉमिक्स पर किछ इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करूचे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 यार ये क्वेश्चन कोड आसी ये क्वेश्चन आसी 22 जुलाई 2023 रे अगेन द हिंदू रे इट लिंक देछि मु समस्त लिंक को क्लिक करके लेटर डाउनलोड कला पर देखि पारे द हिंदू रे गोटे एडिटोरियल आस्थिला जो एडिटोरियल पर बेस करके ये क्वेश्चन आसी related to Rajasthan minimum guaranteed income bill 2023 then next question को आसीबा हमें related to नीति आयोग देखो नीति आयोग सब बेले दिस इज एन क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऊपर ये क्वेश्चन अछि नीति आयोग इज ऑलवेज इज इन न्यूज़ कि रेट ऑफ डेवलपमेंट कोन होउची नीति आयोग आसला पर से सब कारण मानक पई या रिलेटेड जदि हम देखिबा 18 अक्टोबर 2022 रे द हिंदू एडिटोरियल रे ओडे आर्टिकल आसीला या पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु दिस इज ऑन सीएम राइज स्कूल एवं एग्रीमेंट ऑन द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ये दीटा क्वेश्चन आसीला केबे ना आसीला 13 डिसेंबर 2022 रे हिंदू एडिटोरियल एटा टाइम्स ऑफ इंडिया रे आसीला एवं 18 जुलाई 2023 रे एटा इंडिया यूएई डील ऊपर गोटे आर्टिकल देथिला द हिंदू आसीला तले एई पर्यंत हमें जत्ते की पॉइंट डिस्कस करलेनी मते कोन ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसुची ना आसु नै मते कोन ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसुची ना आसु नै यस और नो क्विक समस्त कहे how to see the articles through the link after the class download this from the telegram channel नु समस्त ये पीडीएफ को डाउनलोड करिवे तापर से लिंक को कॉपी पेस्ट कर देबे निजर गूगल क्रोम बा गूगल ऑटोमेटिकली सेटा ओपन हे जे आर्टिकल बुझी पाले नमिता बहुत सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नमदा प्रोजेक्ट ऊपर क्वेश्चन ये देखो 18 नवंबर 2021 रे द हिंदू एडिटोरियल आसी अगेन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन मनरेगा तो सब बेले आसुची मनरेगा सब बेले आसुची एवं देखंतु ये एसडीजी 1 2 5 10 देची ओ जो माने मोर क्लास करथिले रिसेंटली एक्रोस बैच रे जो माने क्लास करथिले से माने क्वेश्चन को इजीली कर पाइबे एसडीजी 1 2 3 4 5 कोन अछि ऑल द 17 एसडीजी गोल्स along with 169 targets that we have discussed in the class रे discussion करथिले याकु समस्त करि परिबे ये क्वेश्चन आंसर then this is related to poverty line estimation ऊपर ये क्वेश्चन अछि ये पॉइंट मध्ये हम डिस्कस करिसे क्लास रे सेम टाइम जो माने क्लास करि सचन से माने जानि परिबे या ऊपर मध्ये आर्टिकल आसीतिला 16 अगस्त 2023 रे द हिंदू रे आसीतिला नेक्स्ट देखंतु रिलेटेड टू forex reserve which of the following are components of forex reserve foreign exchange reserve एटा डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन एटा हम क्लास रे डिस्कशन करिसे ये पॉइंट को हम क्लास रे डिस्कशन करिसे हैला नथिंग न्यू हियर याकु मध्ये समस्त करि परिबे किछ असुविधा नै डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन ये हला 2022 रो क्वेश्चन देन पीएम विश्वकर्मा मध्ये आस्तला 17 सितंबर 2023 रे द हिंदू एडिटोरियल आस्तला पीएम विश्वकर्मा ऊपर आर्टिकल आसीतिला द हिंदू रे 17 सितंबर 2023 रे देन ऑन जीएसटी रे देखन एटी मध्ये सेम जीएसटी रे आसीतिला कोन रिलेटेड टू जीएसटी रे माने स्टैटिक क्वेश्चन जीएसटी रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन देन पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 27 सितंबर 2022 रे आसीछि देखो देन नाबार्ड रिलेटेड क्वेश्चन एटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तापर इनफैंट मोर्टालिटी रेट अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसी सो हमें देखले 2022 रो जत्ते की क्वेश्चन डिस्कस कले कोन बुझिले सेतरु ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहां जहां देखले से माने कोटु आछंती ना करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हां कि नहीं 2022 रो क्वेश्चन हमें देखले करंट अफेयर बेस्ड अछि कि नहीं दैट टू व्हाट इज द सोर्स मोटी कहितली कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज इंपोर्टेंट अननेसेसरी बही अननेसेसरी मटेरियल
अननेसेसरी नोट्स पढ़िबार किछि आवश्यकता नहीं सेति की पढ़िबे जेति की एग्जाम पई रिलेवेंट जेति की एग्जाम रे आसीबो सेति की पढ़िबे सब पढ़िबार कोनोसी आवश्यकता नहीं हां कि नहीं ताले बही तो बहुत अच्छी मार्केट इज फ्लडेड विथ मेनी बुक्स बहुत बही मार्केट रे अवेलेबल अछि बहुत मटेरियल अवेलेबल अछि बहुत नोट्स अवेलेबल अछि ताले हमें सही पोर्शन पढ़िबा बा सेति की मटेरियल सेति की नोट्स पढ़िबा जोटा हम परीक्षा पई इंपोर्टेंट जहाँ को पढ़िले हमको क्वेश्चन आसीबो परीक्षा रे हम क्वेश्चन किछि करि परिबा ताको पढ़िबा तो सब पढ़िबार किछि आवश्यकता नहीं हां कि नहीं यस और नो समस्त कहिबे सुशांत फिजा नमिता सैन मानस लिप्सा सौदामिनी प्रीति पद्मा शांति यस देन व्हाट टू स्टडी रे हम पई इंपोर्टेंट किए हला कहली आदिर सोर्स हम पई किए देखिले वर्तमान ना द हिंदू एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल एडा हम पई बहुत इंपोर्टेंट तला को केमिति पढ़िबा या पर मु स्पेसिफिक क्लास लेछि स्पेसिफिक जगह रे डिस्कशन करिछि समस्ते गोटे प्लेलिस्ट को ओपीएससी वाला जो हमरो अच्छी चैनल एटी यूट्यूब चैनल ले समस्त प्लेलिस्ट को जिबे प्लेलिस्ट रे चेक करिवे गोटे ऑप्शन अछि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेक्शन अछि सेठी देखिबे वीकली ये एडिटोरियल एनालिसिस ता अपलोड होछि एतण कहली वीकली ये एडिटोरियल एनालिसिस ता अपलोड होछि हैला सो केबे होछि ना संडे 11 टा एवरी संडे 11 AM गोटे वीक रो मंडे टू सैटरडे जहां आसीबो एडिटोरियल ये सब इटी अपलोड होती ताको समस्त करि परिबे अलॉन्ग विथ नोट्स समस्त से क्लास कला पर नोट्स निजे बनै परिबे ये गला हमर करंट रिलेटेड देन जदि हम स्टैटिक पार्ट देखिबा ताले स्टैटिक पार्ट कोड कले बेटर ना स्टैटिक पार्ट समस्त स्टैटिक पार्ट ता कोड करिवे ना जो माने क्लास करछन क्लास नोट्स करिवे दैट इज मोर देन सफिशिएंट ता व्यतीत अनेक गुडे बही अछि जोटी बहुत बहीर कथा कोन स्टूडेंट लाइक रमेश सिंह बही अछि कि विवेक सिंह बही अछि शंकर गणेश बुक अछि देन श्रीराम बही अछि सो जदि टेक्स्ट बुक के फॉलो करिया के चाहथनि एज पर योर ओन कन्वीनियंस आउ जोटा भल लागु कोनोसी एनी टेक्स्ट बुक फॉलो करि परिबे एनी टेक्स्ट बुक फॉलो करि परिबे बट बेसी एकेडमिक रिलेटेड बही लाइक बही गुडा जेमति मिश्रान पूरी हे गला ए टाइप रो बही को जदि मे बी डिफिकल्ट लागि पारे डायरेक्ट बुझी परिबे बट जदि क्लास करथनि आई विल रिकमेंड समस्त क्लास नोट्स को फॉलो करंतु क्लास रो नोट्स करंतु दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इजी वे रे एवं बुझुचंदी जहां बुझुचंदी सेटा क्लास नोट रो अछि गेला 2022 रो क्वेश्चन कथा देखले जोटी हम देखियंती 80% क्वेश्चन आसीची को टाइप रो आसी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसीची एवं 2021 रो क्वेश्चन हम वर्तमान देखबा एठी देखिबा हमें 60% बा 70% पाखापाखि स्टैटिक क्वेश्चन आसीची 40% करंट अफेयर बेस्ड आसीची सो एठी 2021 रो ऑलरेडी हिंट दे देले एठी कि नेक्स्ट परीक्षा जो आसुची अपकमिंग परीक्षा से परीक्षा गुडा करे हमें करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पकेबु 2021 रो ये हिंट दिया जाय चलो तो 2022 रे ए टाइप रो क्वेश्चन देखि डरिवार कोनोसी आवश्यकता नाही पिजा आस्किंग सर मु 2027 पई प्रिपरेशन करूची सो मेन फोकस कोन करिया दरकार निश्चित कहबे सुशांत पचारुचंती सर जीके पई को बुक किनले भलो हेबो ओएसपी सीजीएल पई को बुक किनले भलो हेबो डेफिनेटली हम समस्त क्वेश्चन आंसर देबी फर्स्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन पिजा कि 2027 पई जदि प्रिपेयर करूचंती ताहले को बही पढिया दरकार बा को वे प्रिपरेशन करिया दरकार so don't think you have so much of time बहुत समय अच्छी lot of time is there so you'll waste your time rather 2024 end of पासलानी almost 25 26 27 27 रो नोटिफिकेशन 26 रो आसी जिवो so this is the right time to prepare for 2027 examination जदि 27 में प्रिपेयर होचंती एटा वर्तमान होची right time to start your preparation 1.5 वर्ष पाखापाखि जदि प्रकृत रे वास्तव रे देखिबा ठीक भाबरे पढिबे सिलेबस को कंप्लीट करिवे हमको पाखापाखि 1.5 वर्ष लागि जाय सिलेबस सरिया पे 1.5 वर्ष लागि जाय सिलेबस सरिया पे जदि वर्तमान टू पढुचंती ताले 2025 लास्ट बा 26 फास्ट दा हमर स्टैटिक पार्ट सब सरी जिवो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी आईआर सिक्योरिटी इश्यूज एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड एवरीथिंग कवर हे जिवो बाय द एंड ऑफ 1.5 वर्ष हला सो 2026 फास्ट दा हे जिवो समस्ते नमिता सेम पारामिता परमात्मा परमात्मा सेम समस्त सेम ओके ठीक अछि तो सेत पे हम कहि दोती स्ट्रेटजी एबे टू 1.5 वर्ष पर्यंत जदि प्रॉपर्ली प्रिपेयर होचंती ताले आपनकर सिलेबस सरीबो 2026 फास्ट दा तापर टू
रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देवे, टेस्ट सीरीज देवे, करंट अफेयर पढ़े, आंसर राइटिंग करेंगे, ये पाखापाखि 8-10 मास पड़े एंड तापर एग्जाम देवे 27 जो मान परीक्षा देवार अच्छी 27 परीक्षा अपेयर करेंगे, तो 27 परीक्षा 2026 लास्ट रे बाहर जीवो नोटिफिकेशन, तो 26 लास्ट रे अपेयर करियो परीक्षा पे, बुझेला। सो डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज हमार कोनोसी आवश्यकता नहीं, कंफ्यूज हमार कोनोसी आवश्यकता नहीं। यदि बिल्कुल किसी बुझी पारु नांती, जानि पारु नांती, ताले कंप्लीटली क्लास ऊपर रिलाय करंतु, क्लास कंटिन्यू करंतु। मन गोटे बैच कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हबा जाउछि, जोडा काली टू सक्षम बैच कोर्स जोटी आपन को गोटे मेंटर मध्ये अवेलेबल करा दियो, पर्सनल मेंटर जे प्रत्येक स्टेज रे गाइड करिवे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, केमती एसए लिखिवे, कोन आंसर राइटिंग करिवे, एवरीथिंग गाइड सेटी प्रोवाइड करा, ऑल द गाइडेंस यू कैन गेट एंड दैट टू कोर्स गुडा का अपन सब चेक करि परिवे, कोर्स गुडा को सब पीडब्ल्यू एप्लीकेशन अछि, चेक करि परिवे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे कोर्सेस आर अवेलेबल। तो समस्त पढ़ी पारे, नो डाउट, एजुकेशन फॉर ऑल at a very affordable and accessible price. Go through this PW application, सेठी सब related information पाई परिवे, don't worry for that, complete preparation, complete guidance मिली परिवे। So in this batch course economics और social issues जो topic अच्छी, ये subject को मु पढ़ाइबी for prelims and mains examination, comprehensive way रे prepare करिवे। it is a pre-com mains approach, एटा गोटे pre-com mains approach, pre-com mains approach रो अर्थ कोन, सिलेबस डाउनलोड करि परिबे ना, एटी इकोनॉमिक्स रो सिलेबस मु कहली, एटी ऑलरेडी दे दैछि, देखो इकोनॉमिक्स रो सिलेबस एटी देखो मु ऑलरेडी दे दैछि, आकु डाउनलोड करि परिबे, निजे नै परिबे, देखो क्लास पर टेलीग्राम चैनल एटा इकोनॉमिक्स नै परिबे, चैप्टर वाइज दे दैछि, एटी देखो चैप्टर 1 2 3 4 कोन पढिबे, 4 रे 5 रे कोन पढिबे, 6 रे कोन अछि, 7 रे कोन अछि, सब दे दैछि, एवं या व्यतीत सिलेबस मध्ये चैनल ले अवेलेबल अछि। नै क्लास ओवर है, नै क्लास कंटिन्यू होछ, वर्तमान नॉट ओवर, क्लास कंटिन्यू होछ, बुझिला शांति, क्लास सब वर्तमान। सो ये सब कहले मु कि कोठु आसी छि क्वेश्चन, एटु अनेक गुडा क्वेश्चन देखैली जोडा एडिटोरियल एनालिसिस का आसी छि, तो अनेक गुडा इनिशिएटिव व्हिच आर आल्सो अवेलेबल वेरी मच फ्रीली इन YouTube, ताको फॉलो करि परिबे, एडिटोरियल एनालिसिस रो क्लास जेंते कहली, एवं अदर इनिशिएटिव्स। स्टार्टिंग रो करंट अफेयर नेसेसरी नुए, प्रथमे पढिले तो किछि बेसिक, तापर हम बुझि परिबे अदरवाइज केमति करंट इश्यूज, डायरेक्ट करंट अफेयर पढले कोन हम बुझि परिबे कि, डायरेक्टली करंट अफेयर पढले हम किछि बुझि परिबे, सो याको मर्ज करके पढ़ा दरकार, स्टैटिक नॉलेज किछि सिक्योरिटी इश्यूज प्लस किछि इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटी, गवर्नेंस, एगुडा खाली इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, ये सब रे गोटे ओवरऑल आईडिया आसला परे एडिटोरियल बुझि परिबा, करंट अफेयर बुझि परिबा। ऑल ऑफ सडन इफ यू लेट्स से यू आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर, दैट शुड डिसर्टेन नै जो भल लागिबोनी, मे बी बुझी न पार क्वेश्चन, मे बी कांसेप्ट गुडा कटी बुझी न पार, सेति पई समस्ते ग्रेजुअली पढ़ंतु, धीरे धीरे पढ़ंतु, प्रथमे बेसिक कांसेप्ट किछि क्लैरिटी रखंतु, बेसिक कांसेप्ट परे तापरे पढिबे, तापरे करंट अफेयर बुझिबे, बुझिला, तापरे करंट अफेयर बुझिबे, इज दिस क्लियर? तापर आसीबा, एटी मु देखिली क्वेश्चन, एटी अनेक गुडा क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन कली, जो गुडा को पूरा मु लिंक देइची, जो गुडा को लिंक देइची, एंड दे आर वेरी मच अवेलेबल इन द हिंदू एडिटोरियल। इकोनॉमिक्स कहली प्रत्येक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 13टा क्वेश्चन माने कि चलंतो, 12 ରୁ 15टा क्वेश्चन। सो इकोनॉमिक्स बेले बेले सोशल इश्यूज एवं करंट रिलेटेड इश्यूज मिसे के देखिबा, हमें बेले बेले 17-18टा क्वेश्चन मध्ये आसी जाई पारे, 17-18टा क्वेश्चन मध्ये एथुर आसी पारे, तेना को पढिया दरकार, ये बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हम। ए पर्यंत यदि का कुछ डाउट अछि ताले मते कहन, ब्रीफली मु कहली कि हमर सब्जेक्ट मैटर कोन, सिलेबस कोन अछि, एंड हाउ टू प्रिपेयर, एति की भितरे यदि काहा को कुछ डाउट अछि ताले मते। वेरी गुड आफ्टरनून अनुपमा।
बुझी पारे पर्यटन समस्ते ताले आगु बुझिबा आगु बुझिबा किछि बेसिक कांसेप्ट ऊपर डिस्कशन करिया पई फर्स्ट हम देखिबा इकोनॉमिक्स रे हम कहा ऊपर डिस्कस करछे ना इकोनॉमिक्स रे हम रिसोर्स ऊपर डिस्कस करछे कहा ऊपर ना वी टॉकिंग अबाउट रिसोर्स कोन ना जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको रिसोर्स कोन रिसोर्स satisfies ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको कोन कहले ना रिसोर्स जो ह्यूमन वांट देखुचे एगुडा कहउछन अनलिमिटेड रिसोर्स जोटा हम देखुचे रिसोर्स ता लिमिटेड सो लिमिटेड रिसोर्स को यूज करी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करबा को इकोनॉमिक्स बोली सो एटी जो रिसोर्स अछि एवं वांट अछि एटी गोटे क्वेश्चन अछि कहना डिमांड रो केते डिमांड अछि गोटे प्रोडक्ट रो बा गोटे सर्विस रो एवं से डिमांड अनुसार तार सप्लाई केते अछि तो डिमांड और सप्लाई रिसोर्स और यूटिलिटी बा स्कार्स रिसोर्स होचंती इकोनॉमिक्स पढिबार बेसिक कांसेप्ट ये होचंती बेसिक याकू जानिले ही हमर इकोनॉमिक्स ऊपर संपूर्ण आईडिया आसी परिबो अदरवाइज फुल फ्लेज्ड आईडिया आसी परिबो नाही तो फर्स्ट हम देखिए डिमांड कहले कोन बुझे डिमांड कोन डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय कंज्यूमर इज विलिंग इच्छा करछ डिमांड माने अर्थ कोन ना ये कहू डिमांड माने किनिबा पई इच्छा करछ मु कहिबी गोटे फ्लाइट गोटे चप्पर किनिया को मोर इच्छा अछि गोटे राजधानी एक्सप्रेस पड़िया गोटे ट्रेन किनिया को मोर इच्छा अछि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल गोटे चप्पर किनिबा बा गोटे ट्रेन किनिबा पर्सनल यूज पई एटा कोन संभव प्रैक्टिकली द आंसर इज नो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल सो एटी दीटा पॉइंट्स पे कहला डिमांड रो डेफिनेशन जेतबेले पढुचे गोटे हला willing to buy and is able to buy किनिया पई इच्छा थिबो एवं किनी मध्ये पारुथिबो किनिया पई एबल हेतिबा दरकार यदि दीटा तक कंडीशन एटी सैटिस्फाई करूची यदि एटी दीटा तक कंडीशन सैटिस्फाई करूची ताला हम ताको कहबा डिमांड बुझेला सो व्हाट इज डिमांड सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय and able to buy किनिबार इच्छा अछि एवं able to buy then the next is what is the demand function पहला में कोन करू important demand function कोन right expresses the connection between quantity demanded of a commodity and its own price quantity demanded of a commodity and its own price केते क्वांटिटी डिमांड रे अछि एवं तार ओन प्राइस केते अदर फैक्टर गुडा को फिक्स रखि याको हम कहू छै डिमांड फंक्शन एटा देखिबा हम डिमांड फंक्शन ता केमति डिसाइड होउछि मने करा मु कहली ऑल ऑफ सडन डिमांड बढ़ी गला जोटिके बुझिबे ध्यान देकी ऑल ऑफ सडन डिमांड बढ़ी गला जेमति कि कोविड 19 समय रे मास्क रो डिमांड बढ़ी गला रिक्वायरमेंट फॉर मोर मास्क ताले कोन हो मास्क रो सप्लाई ता स्तर कम थिला ताले प्राइस ता बढ़िबो ना कमिबो जो डिमांड अधिक एवं सप्लाई नाही ताले प्राइस कोन हो when there is more demand but low supply ताले प्राइस कोन हो मते कोन क्विक when there is more demand and low supply price increase हो ना डिक्रीज हो समस्त कहि परियो किछ असुविधा नै क्विक डिमांड अछि मने कर गोटे मार्केट रे 100 क्विंटल आलू रो डिमांड 100 क्विंटल आलू न आसे कि मार्केट को आसला 50 क्विंटल ताले डिमांड अधिक सप्लाई नै ताले प्राइस पड़ी जी ठीक तार उल्टा जदी होय ताले प्राइस कमी जी सो ए लॉ ऑफ डिमांड कोन कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची हायर द प्राइस लोअर द डिमांड ये कहूची हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा लोअर द प्राइस हायर द डिमांड कोन कहली लोअर द प्राइस हायर द डिमांड सो प्राइस बढ़िले डिमांड कमी जीवो प्राइस कमिले डिमांड बढ़ी जीवो मन कर हम कहली ग्रेप्स रो प्राइस बढ़ी गला 200 टका 300 टका तार लोक कम कंज्यूम करिवे सो डिमांड एठी कमी जीवो बुझौछु कि नहीं बा मु कहबी किछि गोटे पूजा पर्व परबाणी अछि हैला गणेश पूजा अछि सरस्वती पूजा अछि बा रज अछि सावित्री अछि से समय फलर प्राइस ता बढ़ी जाय ना कमी जाय जार किलो 100 टका थिबो से 120 टका आइ छै काहे कि ना देयर इज मोर डिमांड जेतु डिमांड अधिक ये कुछ सप्लाई फिक्स अछि सो प्राइस बढ़ी डिमांड सप्लाई सॉरी डिमांड कर्व तारि ऊपर डिस्कशन करूची बा डिमांड फंक्शन तारि ऊपर डिस्कशन करूची ये कहूची कि हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड यार किछ एक्सेप्शन अछि एक्सेप्शन कोन ना एक्सेप्शन इज गिवन गुड्स एंड वेवलेन गुड्स
एक्सेप्शन गिवन और वेवलेंट गुड्स ये गुड्स कौन मु डिस्कस करी एटा कोन डिमांड कर्व एटा कोन डिमांड कर्व देखो एटा प्राइस अनुसार केमती चेंज होछ हम देखिबा प्राइस केते और डिमांड केते एटी नियाजी कोन ना डिमांड एटी नियाजी कोन ना एटी नियाजी प्राइस एटा ला डिमांड एटी देखो डिमांड कोन होची रेड मार्क देखो एटी डिमांड एटी बढ़ुची देखो डिमांड एटी बढ़ुची एटी मैक्सिमम डिमांड एटी मिनिमम डिमांड से अनुसार प्राइस देखिलो एटी प्राइस अधिक थिला सबु अधिक तापर देखो प्राइस कमुची प्राइस कमुची प्राइस कमुची प्राइस कमुची सो प्राइस जेतेबेले हम देखले कमुची सेतेबेले कोन होची हम देखले ना डिमांड बढ़ुची प्राइस कमिले हम देखले कोन होची ना डिमांड बढ़ुची हां कि नहीं प्राइस डिक्रीज हेले डिमांड इंक्रीज होची एंड इन द सेम वे प्राइस जेतेबेले इंक्रीज होची डिमांड कोन होची ना डिमांड डिक्रीज होची प्राइस इंक्रीज होला बेले डिमांड डिक्रीज होची हां कि नहीं यस सर तो एटा को जाय डिमांड कर्व this is known as demand curve now come to determinants of demand now come to determinants of demand को factor demand को decide करंती मार्केट रे डिमांड केते हो डिमांड कर्व समस्त बुझिले बहुत इंपोर्टेंट डिमांड कर्व ता समस्त बुझी गले ना का को डाउट अछि कोई समस्त कोन क्लियर नमिता और इति पद्मा लिप्सा परमात्मा नागा शांति नागा सूर्य शांति तो बर्तन में आसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रा हम कोन देखुचे एटी डिमांड डिटरमाइन होची को फोर्स द्वारा बा को फैक्टर द्वारा ये को प्रथम फैक्टर हैला प्राइस ऑफ कमोडिटी गोटे कमोडिटी रो प्राइस केते हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड हैला lower the price higher is the demand price कमिले डिमांड एटी बढ़ुची नाउ एला प्रथम कथा डिमांड कमोडिटी रो प्राइस केते अछि सी डिमांड को डिसाइड करूची माने कर मु कहबी ग्रेप्स केजी 60 टंका 60 रुपीस थिला बेले तार डिमांड अधिक एतले ग्रेप्स आसुनी 120 200 रुपीस जाउची 300 रुपीस जाउची सेतले डिमांड बा मु इंपोर्टेड प्रोडक्ट कहबी इंपोर्टेड ग्रेप्स रो कथा कहबी जार प्राइस होची 300 रुपीस रो मिनिमम स्टार्ट इंपोर्टेड एप्पल 300 रुपीस रो मिनिमम स्टार्ट तो सेठी डिमांड ता कोन होची प्राइस अनुसार होची मोर द प्राइस लेस इज द डिमांड एंड लेस इज द प्राइस मोर इज द डिमांड देन द्वितीय कथा कहूची प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स माने कर मु कहली इंपोर्टेड ग्रेप्स जो ग्रेप्स हमें बाहर किनी के आनुचे इंपोर्ट करी के आनुचे लेट्स से तार प्राइस केते अछि इंपोर्टेड ग्रेप्स रो लेट्स से दिस इज 300 रुपीस पर केजी 300 टंका पर केजी सेमति हमें देखुचे डोमेस्टिक ग्रेप्स ता केते अछि डोमेस्टिक ग्रेप्स केते अछि 60 रुपीस पर केजी ताले मते कोन डिमांड ता इंपोर्टेड ग्रेप्स रो अधिक रहिबो ना कम रहिबो समस्त कहि परिबे कोन जदि इंपोर्टेड ग्रेप्स रो प्राइस 300 टंका हुए एवं लोकल ग्रेप्स रो प्राइस 60 रुपीस हुए ताले मते कोनतु इंपोर्टेड ग्रेप्स रो डिमांड ता अधिक रहिबो ना रहिबो समस्त कोनतु कहि परिबे डिमांड कमी जीवो काहे कि ना रिलेटेड प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो प्राइस ता तो 60 टका हां कि नहीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो प्राइस ना होची 60 रुपीस जदि डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो प्राइस 60 रुपीस ताले इंपोर्टेड ग्रेप्स को 300 टका देकी की किनिबो तले देखो 300 टका देकी की किनिबो सो रिलेटेड प्रोडक्ट रो रिलेटेड गुड्स रो प्राइस ता भी हम पई इंपोर्टेंट कोन देखलेटी ना रिलेटेड गुड्स रो प्राइस भी हम पई इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट को जीवा इलास्टिसिटी रे हम कोन देखुचे एट दुचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस केते क्वांटिटी डिमांड रे अछि देखुचे परसेंटेज बा डेल्टा
D divided by delta P. डेल्टा डी कौन ना डेल्टा डी होची परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड केते क्वांटिटी डिमांड रे अछि तार परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्राइस चेंज हेले सिंपल जिंस प्राइस केते परसेंट चेंज हेले केते परसेंट डिमांड चेंज होची तो हम इलास्टिसिटी बोली कहू छै नेक्स्ट इलास्टिक डिमांड कौन और इन इलास्टिक डिमांड कौन ये कहू छी जदी इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ चेंज इन प्राइस जदी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हैला विथ चेंज इन प्राइस ताल तो कहते इलास्टिक डिमांड कौन कहली क्वांटिटी डिमांडेड जदी चेंज होती विथ चेंज इन प्राइस तब कहबो इलास्टिक डिमांड ये कहू छी क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स डजंट चेंज विथ चेंज ऑफ प्राइस प्राइस चेंज हैला बट डिमांड चेंज हैला नहीं तब कहबो इन इलास्टिक डिमांड कौन कहबो इन इलास्टिक डिमांड you could price change whatever may be the change in price if there is absolutely no change in demand यदि डिमांड रो किछि भी चेंज होनी ताको कहबो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कोन कहबो ताको कहबो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ताल तीनटा कथा एटी कहनी तीनटा पॉइंट ऊपर हम एटी डिस्कशन कले कोन कोन ना प्रथमे हमें देखिले प्रथम डिस्कशन कले प्रथम एटी कहा पर डिस्कशन कले जदि प्राइस चेंज होची ताको जो इलास्टिक डिमांड जदि प्राइस चेंज होउनी ताले इनइलास्टिक डिमांड एवं जदि बिल्कुल किछि इंपैक्ट पडुनी ताको जो जीरो डिमांड जीरो प्राइस इलास्टिसिटी बा कोन को जो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी तापर हम आसीबा बुझे गेला इलास्टिक इनइलास्टिक ना काकू डाउट अछि इलास्टिक इनइलास्टिक क्लियर एवरीवन तापर हम आसीबा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट को ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स on different types of goods प्रथमे हम देखिए substitute goods कोन substitute goods कोन कहउची ना ये कहउची जदि if the price of substitute goods increases then the demand for given commodity increases demand for same माने same commodity increases माने कर हम कहली टी और कॉफी टी टा माने कर अछि 10 टका कॉफी टा अछि 15 टका बर्तमान टी रो प्राइस बढ़ी के गेला लेट्स से 20 टका कि 15 टका ताल लोक कोन पीबे ना कॉफी पीबे को लागि so याको कहले सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी टा होची टी पई सब्स्टिट्यूट बट टी टा होची कॉफी पई सब्स्टिट्यूट टी टा होची कॉफी पई सब्स्टिट्यूट तो ता कहले सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िले आरो प्रोडक्ट रो प्राइस टा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हिजी देन कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कोन मु कहली चा पई चीनी बिना चीनी रे चा हे परिबोनी सो चा चीनी टा होची एटी कोन ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स यदि मते को चीनी रेट गुड बढ़ी जाए त चा का ऊपर प्राइस बढ़िबो कि नहीं यदि मिल्क बा अमूल रेट बढ़ी जाए तल चा का ऊपर प्राइस बढ़िबो कि नहीं यस बढ़िबो तेन तो कहै कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स देन इज नॉर्मल गुड्स कोन ना कुछ डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम बढ़िया सहित ये गुड्स मानकर डिमांड टा बढ़ी बढ़ी चले एग्जांपल कोन ना ऑर्डिनरी टीवी टीवी जने किनुची बा बाइक किनुची फ्रिज किनुची ये सब ता इनकम बढ़िले ये सब प्रोडक्ट गुडा करे से खर्च अधिक रो अधिक करि जाय then is inferior goods कोन ना ये कहउची जदी इनकम बढ़े किछि प्रोडक्ट मानकर यूज ता हमर कमी कमी जाय जेमति कि जने इनकम बढ़िले घर को इलेक्ट्रिसिटी आनिले आ केरोसिन यूज करबोनी डीबी लंठन आ जालिबोनी सो ऑटोमेटिकली हमें कहले दाकू कोन ना inferior से गुड्स रो वैल्यू टा कमी गला हम देन इज गिफन गुड्स रे कोन हुए ना जते बळे प्राइस बढ़ी जाय ताको हम लोक मानक लागे कि बहुत ब्रांडेड अछि बहुत सॉरी एटा गिफन गुड्स ता केते बळे आसे ना व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जेतो कुछ ऑप्शन नाही ताको हम कहते गिफन गुड्स माने कर हम कहली पोटैटो बर्तन पोटैटो प्राइस बढ़ुची सो पोटैटो रो कुछ ऑप्शन नाही यू हैव टू कंज्यूम पोटैटो हमको पोटैटो खाइबा को ही पड़िबो तो ताको हम कहले एटी कोन ना गिफन गुड्स देन वेवलेन गुड्स कोन ना वेवलेन गुड्स रे हमें देखुचे व्हेन अ प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर कमोडिटी यदि हम परचेज करूचे हमको लागुची कि हमर स्टैंडर्ड एटी बढ़ी जाउची कोन होची कहली ना हमको लागुची हमर स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाउची ताको हम कहूचे वेवलेन गुड्स सो गोटे प्रोडक्ट को किनिले बा गोटे प्रोडक्ट को परचेज कला परे जदि हमको लागुची कि हमर वैल्यू इंक्रीज होची ताला हम ताको कोन कहूचे ताको हम कहूचे वेवलेन गुड्स बुझियला डिमांड पार्ट समस्त को क्लियर ना काको डाउट अछि आ गोटे पॉइंट ऊपर आज डिस्कशन करबी दैट इज सप्लाई डिमांड पार्ट समस्त को क्लियर ए डिमांड सप्लाई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यार ऊपर नहीं कि पूरा इकोनॉमिक्स बर्तन रिवॉल्व करी समस्त बुझिले डिमांड कोन
तापर सप्लाई को आसीबा सप्लाई कहले कोन बुझी सप्लाई कहूची दिस इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फार्म इज विलिंग एंड इज एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस फार्म इज विलिंग फार्म रो इच्छा अछि एवं बिक्री से करिवो टू सेल एट अ गिवन प्राइस दीटा जाक पॉइंट थिवा दरकार इज एबल टू सेल गोटे फार्म अछि से कहबो से कह मु एरोप्लेन बिक्री करिवि बट से फार्म रो काम होइतबो टीवी प्रोडक्शन करिवा से बिक्री करि परिबो से एबल हेतिवा दरकार एवं इच्छा थिवा दरकार ताको हम कहते सप्लाई सप्लाई फंक्शन कौन ये कुछ सप्लाई फंक्शन ऑफ गुड्स दैट एक्सप्रेसेस कनेक्शन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड ओन प्राइस प्राइस केते एवं क्वांटिटी सप्लाइड केते से क्वांटिटी टा सप्लाई होची मार्केट रे एवं तार ओन प्राइस केते अछि सेही दिटा ऊपर जो रिलेशन देखौचे ताको हम कहउचे सप्लाई फंक्शन सो लॉ ऑफ सप्लाई कौन कहउची ना जदी सप्लाई इंक्रीज हुए ताले जदी प्राइस इंक्रीज हुए ताले सप्लाई इंक्रीज हो सिंपल जिंस ये कहला जदी प्राइस इंक्रीज हुए ताले सप्लाई इंक्रीज हो व्हाई प्राइस इंक्रीज होले सप्लाई टा काहे की बढ़ियो ना माने करो मु सप्लायर बा मु प्रोड्यूस करूची नमिता यू हैव अ डाउट ऑन इलास्टिसिटी ठीक अछि बुझिबे आमे आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन हैला आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन तुम क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबी डोंट वरी सो एटी कहली कि सप्लाई बढ़िले सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीजेस केते बळे ना व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस प्राइस बढ़िले सप्लाई बढ़ियो व्हाई ना माने करो मु प्रोड्यूसर मोर ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करबा जेते बळे प्रोडक्शन बढ़िबो केते बळे व्हेन देयर इज मोर डिमांड बा जेते मोर डिमांड सो सप्लाई बढ़िले डिमांड बढ़िले सप्लाई बढ़िबो एंड सप्लाई बढ़िले मु प्रोडक्शन बढ़ी सो प्राइस इंक्रीज हे बुझेला कि नहीं बुझेला कि नहीं पॉइंट लॉ ऑफ सप्लाई कोन कहूची सो एठी प्रोड्यूसर इंक्रीज करूची प्राइस को कोन पई ना टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़िया पई प्रोड्यूसर तर प्राइस को इंक्रीज करूची इज इट क्लियर सप्लाई कोन समस्त क्लियर बुझी परले ना डाउट अछि नमिता क्वेश्चन कोन पचार व्हाट इज योर डाउट नमिता एग्जैक्ट क्वेश्चन कोन पचार पचार एटा कि इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी और जीरो प्राइस ए पॉइंट ऊपर पचार कि वाला इन इलास्टिसिटी और जीरो प्राइस ये कहूची इन इलास्टिसिटी कोन हुए मु कहली कि प्राइस चेंज होची ये कहूची प्राइस चेंज हला पर डिमांड रे बेसी किछि चेंज होबा आड़ो किलो 20 टका थिला 22 टका हे गला कि 21 टका हे गला तो डिमांड रे बेसी किछि चेंज होबनी जहां डिमांड थिला पाखा पाखी सेम डिमांड रही जहां डिमांड थिला पाखा पाखी सेम डिमांड रही बट जदि 20 टका 50 टका हो जाउची ताले डिमांड ऊपर अधिक इंपैक्ट पड़ियो हैला येला इन इलास्टिक जीरो इलास्टिसिटी कोन ना बिल्कुल किछि इंपैक्ट पड़िबनी जीरो इलास्टिसिटी रे बिल्कुल नो इंपैक्ट 20 रु 22 टका हेले जदि 50 टा लोक किनुथिले सेटा कमी के 48 टा कि 47 टा लोक किनिबे माने अल्प किछि चेंज हो डिमांड रे अल्प चेंज स्लाइड चेंज कहउथले ना इन इलास्टिक जीरो इलास्टिसिटी रे बिल्कुल नो चेंज प्राइस बडू कम लोक जहा किनिया कथा किनिबे सेटा जीरो इलास्टिसिटी बुझेला मु कहि मेडिसिन मेडिसिन ने कोन हो मेडिसिन लोक किनिबे ही किनिबे सो मेडिसिन दा होची जीरो प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर टाइप्स ऑफ गुड्स देखिले हमें बुझिले एटी वेवलेन गुड्स ता कोन कहली एतो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आनुचे हमको लागुची कि एटा हमर स्टैंडर्ड देखौछ मु कहि गोटे एप्पल आईफोन यूज करिया दामी कार यूज करिया दामी घर यूज करिया सेटा सब बोले ना वेवलेन गुड्स बिकॉज़ हमको लागुची एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर तापर सप्लाई कथा तो एटी कहली सप्लाई रे कोन होची हम बुझिले एटा देखो सप्लाई रे कोन होची ना सप्लाई जते बेले बढ़िबो प्रोड्यूसर सप्लाई काहे के बढ़िबो ना प्राइस इंक्रीज करिया पे बढ़िबो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिया पे एटी सप्लायर बढ़िबो इक्विलिब्रियम केते बेले हुए ना डिमांड और सप्लाई डिमांड अनुसार सप्लाई हुए सेते बेले इक्विलिब्रियम एटा देखो डिमांड और सप्लाई रो ए जो पॉइंट देखुछो एटा कोन ना एटा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एटी डिमांड जति के से अनुसार सप्लाई हे जाउछ डिमांड अनुसार एटी सप्लाई हे जाउछ बुझियला मु एटी गोटे ताले क्वेश्चन दोछि मते को inflation arises at the stage of equilibrium true or false
Inflation arises at the stage of equilibrium. True or false? समझते कहिए. Equilibrium रे at the condition of equilibrium inflation हुई. समझते कौन ट्रू और फॉल्स. शांति ट्रू. नमिता फॉल्स. इक्विलिब्रियम रे कोन होतला टिके देखियो समस्त कोंदु विश्व ट्रू. ओके अन्य माने समस्त कोंदु ठीक होगा भूल हो समस्त आंसर दियन. आंसर देले ही ठीक हो. क्वेश्चन एटी लिखा है परा इन्फ्लेशन अराइजेस एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम रे इन्फ्लेशन हबो. विश्व फॉल्स. लिप्सा आउथरे. समस्त देखंतु एटी कोन होची एटा होची कहली दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. ता माने कोन इक्विलिब्रियम रे कोन होतला डिमांड अनुसार देयर इज सप्लाई. डिमांड अनुसार देयर इज सप्लाई. ओके यदि डिमांड अनुसार सप्लाई हुए जेतिकी डिमांड सेतिकी सप्लाई ताले इन्फ्लेशन माने कोन प्राइस हाइक. एटी प्राइस बढ़िबो कि जेतिकी दरकार सेतिकी अवेलेबल अछि ताले प्राइस तो बढ़िबो. यदि जेतिकी दरकार सेतिकी अवेलेबल अछि ताले प्राइस एटी इंक्रीज होबो कि क्विक समस्त कोन और कहीं के प्राइस इंक्रीज हो. इंक्रीज होबोनी. So the statement is false. Hello? Clear? Everyone clear? False. समस्त बुझी पाले why false? पहले हमें देखिए functions of economics. हमें ये already देखिले कि we have limited resource. Resources are limited. Resources are limited. Human wants are unlimited. Human wants are unlimited. So unlimited human want को हमें satisfy करछे by using limited resource. जाको हमें कहउछे economics. So economics दीटा टर्म आसीची गोटेला ओइकस आ गोटेला नोमस. ओइकस रो अर्थ होची फैमिली बा हाउसहोल्ड. नोमस रो अर्थ होची कोन कस्टम बा मैनेजमेंट. नोमस रो अर्थ कोन कस्टम बा मैनेजमेंट. तो हमें एटी हाउसहोल्ड मैनेजमेंट बा कस्टम मैनेजमेंट को हाउसहोल्ड बा कस्टम मैनेजमेंट को हमें एटी इकोनॉमिक्स बोली कहउछे. So general definition देखियो what is the general definition of economics. ये कुछ इट इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज. ह्यूमैनिटीज कौन ह्यूमैनिटीज होची स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमैनिटीज इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी रो स्टडी को ह्यूमैनिटीज कहले. सो डे टू डे बेसिस रे वी डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी. प्रत्येक दिन हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करते लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी को हमें कहउछे पॉलिटिकल साइंस. स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटी को हमें कहउछे सोशियोलॉजी. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें कहउछे इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को हमें कहउछे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो एटी मु कोन कहली ना स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी पुनी कोन ना ये कहउछे द एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स प्रॉफिट लॉस वेज पेमेंट. एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड्स प्रॉफिट लॉस वेज पेमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ताको हमें कहउछे इकोनॉमिक एक्टिविटी. बुझला प्रॉफिट लॉस वेज पेमेंट जोटी इन्वॉल्व होची ताको हमें कहउछे इकोनॉमिक एक्टिविटी. बुझेला. देन आउ गोटे डिफरेंस देखिबा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स टा कोन एंड दिस इकोनॉमिक्स इज थ्योरी. तार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कहआ जाय इकोनॉमी. कोन कहली तार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कहआ जाउची इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. इकोनॉमिक्स इज द branch of humanities. इकोनॉमी कोन ना इकोनॉमी टा होची तार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इकोनॉमी होची व्हाट इज इकोनॉमी ना इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ताको हम इकोनॉमी बोली कहू. नाउ इज दिस क्लियर द डिफरेंस.
नाउ इकोनॉमिक्स को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटला माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गोटला माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोटा हूँ गोटे नैरो कॉन्सेप्ट एटी आमे गोटे इंडिविजुअल बा गोटे हाउसहोल्ड रो डिसीजन ऊपर डिस्कशन करूचे गोटे इंडिविजुअल गोटे हाउसहोल्ड बा गोटे कंपनी रो डिसीजन ऊपर डिस्कशन करूचे मैक्रो रे आमे कोन करूचे ना हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी आमे एटी एंटायर इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन करूचे फुल इकोनॉमी टोटल इंडिया रे जीडीपी केते इंडिया रे जीएनपी केते इंडिया रे अनएम्प्लॉयमेंट केते ये सब डिस्कशन करू माइक्रो रे गोटे पर्टिकुलर कंपनी केमती तार इनकम बढ़ी पारिबो केमती तार प्रोडक्ट को मार्केट रे अधिक सेल करि पारिबो से सब माइक्रो रे डिस्कस करछे से सब माइक्रो रे डिस्कस करछे बुझियला द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो ना डाउट लेकिन केतरा क्वेश्चन मते कोन योर इनकम इज माइक्रो और मैक्रो योर इनकम इज माइक्रो और मैक्रो माइक्रो कहीं ना इंडिविजुअल कथा में डिस्कशन करछे सो दिस इज माइक्रो मोबाइल इंडिया रा जीडीपी 2020 रे केते थिला माइक्रो और मैक्रो इंडिया रा जीडीपी इन 2020 माइक्रो और मैक्रो इंडिया रा जीडीपी 2020 रे माइक्रो और मैक्रो we are talking about the whole economy is hame कहउछे this is macro nela macro then level of unemployment in IT sector level of unemployment in IT sector micro or macro समस्त कोन एटा होचे माइक्रो level of unemployment in India level of unemployment in India एटा कोन हो माइक्रो और मैक्रो unemployment माइक्रो और मैक्रो talking about the whole economy entire economy ऊपर डिस्कशन करे कोन होई whole economy ऊपर डिस्कशन कले एटा मैक्रो हो जाए and quantity of production by Tata in 2020 quantity of production by Tata एटा कोन हो माइक्रो ना मैक्रो
दिस इज माइक्रो ताले माइक्रो मैक्रो भीतर समस्त बुझिले ना काकू डाउट अछि माइक्रो मैक्रो बुझिला ना काकू डाउट अछि क्लियर एवरीवन समस्त बुझिले तापर हम देखिया प्रॉब्लम कोन इकोनॉमी तीनटा बेसिक प्रॉब्लम थाए व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस हम देखिबा कि कोन प्रोड्यूस होवा दरकार वेदर कैपिटल गुड्स बा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बा इंडस्ट्री बा सर्विस कोन प्रोड्यूस होवा दरकार हाउ टू प्रोड्यूस मींस व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन अधिक लेबर इंटेंसिव करबा तो कैपिटल इंटेंसिव करबा ना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव करबा है ये सब आम कहे हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस आम देखा कौन ना वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द कस्टमर और वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द सिटीजन वेदर प्रोड्यूसिंग फॉर कस्टमर और प्रोड्यूसिंग फॉर सिटीजन सिटीजन प्रोड्यूस करछे ना कस्टमर याको किए देखिबो ना याको प्राइवेट सेक्टर देखिबो याको प्रोडक्शन या किए करिवो ना गवर्नमेंट बा स्टेट करिवो या किए करिवो गवर्नमेंट बा स्टेट प्रोडक्शन करिवो बुझियला so this is the basic problem of economy ये तीनटा को हमें बेसिक प्रॉब्लम कहउचे व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस यदि आ भीतर डाउट रहिला मते पचार ये आज खाली बेसिक ऊपर डिस्कशन करूची नेक्स्ट क्लास रो या पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेबी एवरी टॉपिक प्रत्येक दिन रो टॉपिक जहा थिबो जो टॉपिक हमर थिबो डिस्कशन करिया पई ता ऊपर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबी मन कर एग्रीकल्चर अछि हम एग्रीकल्चर रो क्वेश्चन इंडस्ट्री क्वेश्चन बा फॉरेन ट्रेड रो क्वेश्चन सो आको क्वेश्चन आंसर थ्रू रे हम पढिबा ए सीरीज रे पूर्व सीरीज रे आरंभ सीरीज रे हमें पढुतले कांसेप्ट को ये सीरीज रे हमें डिस्कशन करबा अबाउट सम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर थ्रू रे हम आको डिस्कस करिया ताले जहां जहां कहली ता भीतर किछि डाउट अछि ताले मते पचारो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन यदि कार किछि डाउट अछि क्विक एनी डाउट ताले आज रो क्लास रे हम कोन डिस्कस करले व्हाट इज द समरी ऑफ दिस सेशन को पॉइंट ऊपर आज हम देखिले कौन कौन डिस्कस प्रथम हम देखिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो को टाइप रो क्वेश्चन आसुची यार ट्रेंड कौन टाइप ऑफ क्वेश्चन एवं तार ट्रेंड कौन देखिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस देखिले हम सोर्स कौन पढ़िया दरकार सोर्स कौन पढ़िया दरकार देखिले एवं किछि बेसिक कांसेप्ट ऊपर हम डिस्कशन कर लाइक मैक्रो कौन माइक्रो कौन macro and micro then we have discussed about demand and supply most important demand supply and price demand और supply अनुसार price केमती चेंज होउछ एई टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन कले जदि किछि डाउट अछि ए टॉपिक ऊपर ताले पचारो any doubt on this topic any doubt on this topic quick no doubt ठीक है जदि किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन पचरे पे चाहउचंती फ्रॉम previous year question or preparation strategy
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन जदि अच्छी पचार इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी कहली इकोनॉमिक्स होची थियोरी इकोनॉमी होची गोटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट आउ डिस्कस करी डोंट वरी लिप्सा तापर आहुरी डिस्कशन करी जदि आज किसी बेसिक ऊपर डाउट अच्छी मत पचारतु कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स बा प्रिलिम्स कौन पढ़े कौन न पढ़े यार ऊपर जब किसी अच्छे क्वेश्चन ताले पचारतु नो क्वेश्चन नहीं यही सैटरडे मोर क्लास नहीं अगेन नेक्स्ट वीक रे मो क्लास इकोनॉमिक्स क्लास मो पुणी नेक्स्ट वीक रे नेबी ऑन वेडनेसडे आज वेडनेसडे रे अच्छे क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे यस ये सीरीज कंटिन्यू हम प्रत्येक दिन क्लास रहिबो ये सीरीज रे आज इकोनॉमिक्स गतकाली थिला ज्योग्राफी इन द सेम वे गतकाली ज्योग्राफी आज इकोनॉमिक्स पुणी नेक्स्ट टॉपिक आसीबो पॉलिटी हिस्ट्री सब पढ़िबे साइंस एनसीईआरटी एनी बुक कौन भी ऑथर पढ़ी पारे रमेश सिंह गुड एनसीईआरटी बुक भल बट मुझे रेकमेंड करी क्लास नोट करने क्लास नोट इज मोर देन सफिशिएंट करंट इश्यूज रोचे बहुत गुड़े पॉइंट मिसिक रोचे जोटा गोटे बही न था सब बही ना गोटे गोटे एंगल थाए से एंगल लिखा बही गुड़ा बट क्लास पाखापाखि आम सब एंगल गुड़ाक डिस्कसन कर बुझेगा ठीक अच्छे then that's all for this session. I will discuss more in the next class. Let's wrap up this class. Let's wind up this session. See you in the next class. Thank you all. Thank you very much.